सर हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर अभी भी शुरू किया है? सर। सर अभी शुरू किया। सर हाँ बेटा। मॉर्निंग सर। sir, can you explain me dative bond? या एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। जस्ट वेट 1 मिनट। Yes, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Sir, you have muted yourself, sir. 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। हाँ हाँ, okay, sir.
So children, Yes, sir. okay, right. तो Yes, sir. चलो बेटा आज का Good morning. मॉर्निंग सर। लोकल के लिए वोकल बने और आत्मनिर्भर। मॉर्निंग सर। Good देखो morning, बच्चा, sir. यस आज हम Good लोग morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। बस अब मेरे को क्लास स्टार्ट करने दो। ओके Unmute everyone. भास्कर, Yes, sir. मेंटेन Good morning, साइलेंस। sir. सिमरन, मेंटेन साइलेंस। Yes, sir. सुप्रिया, ओके। अब आज हम लोग बच्चों बात करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। Okay, covalent bond formation. Already we have started yesterday. I have explained Lewis concept. Yes. Okay, what was the concept Yes, of sir. Lewis? Yeah. So first you have to remember that what is the condition applied. Now we are going to form between electronegative and electronegative. Yes. Means both the electrons are not having tendency to lose electron. Yes, sir. Okay, so Yes, this is the sir. first condition.
So what he told Lewis in this condition that, okay, so this was the see, please go through this Lewis concept for covalent bond formation. And what he told that atom should be electronegative and electronegative. Okay. Yes. And he told that bond will be formed by mutual sharing of their valence electrons. Valency electrons. Yeah. And that bond is known as covalent bond. When he told, Yes, sir. when both the atoms are what? Electronegative. Come nearer to the speaker so that you can respond it properly. Yes, sir. Okay. And next thing what you have to remember, please note it down or take the screenshot. Completed? Yes, Sir, sir. screen. Yes, Sir, sir. I'm writing. Okay. That Right. I am also writing. Okay, right What fast, is right? then Lewis concept for covalent bond? Yeah. Covalent bond. Sir, screen is too blur. To blood. Okay. Yes, sir. It is blood for everybody? No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. So, yeah, see audience with me. अपना नेटवर्क ठीक करो. कितना जल्दी मेरे ऊपर ये कर देते हो. अरे मैं सोचा आप लोगों का कुछ हो तो इसलिए. ओके. अब तो जियो का नेट चल रहा हूँ मैं इसलिए हो नहीं रहा. ओह बाबा जियो. जियो शेर जियो. हाँ अभी आया, अभी स्क्रीन पर ठीक ठाक आ रहा है. कोई बात नहीं, हम इधर से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. फिर से ब्लर हो गया. हाँ वो मैं जियो से बात कर रहा हूँ. रुको. लिख लिया पूरा. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो. हाँ. ठीक है. उसके बाद नहीं होगा तो वीडियो तो बन ही रहा है ना, मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है सर. देखो किसी का साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, मैं म्यूट कर दूंगा. ये देखा. ओके नेक्स्ट इज, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, नोट है यहाँ पर. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए एक्साइटेड स्टेट का और ग्राउंड स्टेट का. हेलो. यस Yes, सर. sir. और कल हम लोग Yes, डिस्कस sir. कर लिए थे इस पे, याद है? Yes, sir. यस सर. ओके. और इन सब तमाम स्टोरी के अंदर रोल ऑफ किसका रहेगा? लुइस. Lewis symbol. लुइस सिंबल. ओके. अब लुइस सिंबल क्या है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. लुइस सिंबल आर सिंबल विथ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यस सर. Yes, sir. लुइस सिंबल रहेगा सिंबल प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सिंबल विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Valence electron. ओके नेक्स्ट इज, अब देखो तो हम लोग को लुइस, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सबको लुइस सिंबल बनाने आ गया है. यस सर. Yes, sir. जी सर. तो अब देखिए उसमें फॉर्मेशन ऑफ H2 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ H2 कैसे बनेगा. तो आप देखिए H2 में ये है लुइस सिंबल ऑफ H2. Okay, sir. हाँ नॉट H2. Yes, sir. फर्स्ट we will Yes, write the sir. Lewis symbol for H and another H. Yes, sir. Yes, sir. Now can you tell me the tendency of hydrogen? It want to complete it duplet or octet? Duplet. Sir. Duplet. Yes, because atom is small, so its requirement is also very small. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. Yes sir. Yes. एक छोटा सा बच्चा हुआ, एकदम छोटा सा बच्चा, 4-5 दिन का है, बताओ छोटा सा बच्चा. Yes, sir. उसका रिक्वायरमेंट क्या है? वो खाना में क्या खाएगा? सर थोड़ा खाएगा. थोड़ा सा खाएगा. क्या खाएगा बताओ? सेरेलैक.
हाँ, सेरोलैक्स खाएगा, थोड़ा दूध पिएगा, पानी पिएगा, यही करेगा। उस बच्चे से पूछोगे बेटा क्या खाओगे आज, तो बोलेगा चिकन बिरयानी। नहीं सर। नहीं नहीं, बोलेगा, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट छोटा सा है। Yes, sir. Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, उसको तुम लेग पीस दे दोगे चिकन पीस का तो खाएगा क्या? ना ना नहीं, नहीं, दांत ही नहीं है उसका। या दांत ही नहीं है। तो उसका रिक्वायरमेंट वही है बेटा, इसलिए हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट खाली डुप्लेट होने का है। Yes, हाँ, sir. इसलिए यहाँ ऑक्टेट काम नहीं करेगा। अगर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक तो शेल दे खाली हो दिया, जाएगा। अगर दे दिया तब तो बातें अलग हो जाता। फिर यहाँ पर तुम मिस्टेक कर रहा है, दोनों में कोई देना नहीं चाह रहा है। Sir, Sharing, sharing कर रहा है, mutual sharing. हाँ, देना करना है अलग चीज बोलो। हो गया, देना अलग चीज हो गया और शेयरिंग अलग चीज हो गया। Oh, Yes, sorry, sir. गलती से Yes, sir. एकदम गलती से याद mistake रखना, हो गई। एकदम याद रखना, मिस्टेक नहीं करना। आई थिंक इट्स ओके फॉर यू। Yes, sir. Yes, sir. Nobody want to give electron. That's why Lewis told that, okay, you don't fight, do what I am telling, please share your electron. So देखिए ये शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Yes, sir. हाइड्रोजन Yes, ऐसे sir. आया, नियर आया, ये हाइड्रोजन भी नियर आया और बोला चलो आज से ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपन के शेयर करके। Yes, sir. तो ये हुआ शेयरिंग पार्ट। आई बात समझ में? Yes, sir. और जब शेयर हो गया, when they have shared a couple of electrons, and when I wanted to separate them, I wanted to stretch them, I wanted to separate them, they did not get separated. Yes, sir. It means a kind of attraction force between them developed. Yes, sir. Yes, And sir. So covalent bond does not separate. Definitely. How? Bond means attraction force. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Don't forget the basic knowledge. Bond. What is bond? A kind of attraction force between two particles. Yes, sir. And this bond is formed by sharing of electrons. Yes, sir. Yes, sir. And only small intention is completed, and that intention is, that tendency is to become duplet. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So yes, Sir. the attraction force is developed, is known as covalent, and it is bond. It is bond. Bond means attraction force. Yes, sir. Yeah. And this total scenario we can write, because every time we cannot draw for H2. So we will write this way, H dash H. Yes, sir. Okay, sir. And this is dash means there are two electrons. Yes, sir. Okay, sir. And when a single bond is formed between two atoms, that bond is known as Sigma covalent bond. bond, and it is also named as sigma bond. Sigma bond. Did you understand? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. Every sigma is a covalent bond, Okay, sir. but every Okay, sir. covalent bond is not a sigma bond. How, sir? How? See? How means yesterday I have discussed. You have forgotten. If some double bond is formed, then one will be sigma, one will be pi. Yes, sir. Okay, sir. If triple bond is formed, one is sigma, all remaining are pi. Yes, sir. So all are covalent bond. But covalent bonds are of, okay, Yes, sir. sigma, pi, and one is dative bond. Yes, sir. I will Yes, sir. explain what is dative bond. Don't worry, okay? Yes, sir. Okay, sir. Remaining बच्चों का आवाज नहीं आ रहा, कहाँ चले गए? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now just see formation of chlorine. Can you show formation of chlorine? Yes, sir. So Yes, sir. like Lewis symbol for chlorine. Lewis symbol for chlorine. Yesterday I told you how to write the Lewis symbol. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So there are 7 electrons.
So they are lone pair and only one electron is there, which is unpaired. Yes, sir. Yes, That, sir. that unpaired electron has tendency to sharing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now they will come closer. This arrow tells us that both the atoms are coming close. Yes, sir. Why they are Yes, coming sir. close? What is the tendency? What is the force driving them? That Bond. when they will come Bonding closer, force, sir. this unpaired electron will be paired. Yes, sir. And Yes, because sir. of this, uske lalach mein, for that purpose, they came near and they have shared their electron. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now see, their octet Yes, is sir. completed, and Yes, sir. its octet is Yes, also sir. completed. So we can write like this. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. And how many bonds are found between Cl and Cl? Sir, Single single covalent bond. bond. Single bond. Single That's- bond. So is it a pi bond or sigma bond? Sigma Sir, bond. sigma Sigma bond. bond. Sigma bond. Good. Now tell me, number of electrons shared in this molecule? 2. Sir, Two. 2. 2. Number of non-bonding electron in this molecule? 12. 12. 12. Very nice, very nice. I am very happy, very happy, very happy. Now, tell me about nitrogen. So write the Lewis symbol for nitrogen. Am I clear? This is the Lewis symbol of nitrogen. Yes, Yes, sir. sir. Yes, This is the sir. Lewis symbol. This is the Lewis symbol for another nitrogen atom. Yes, Yes, sir. Yeah. And in Yes, each sir. nitrogen atom, there are 3 electrons which are unpaired. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you don't know, sir, how this unpaired, you can tell me, I can explain it again. Sir, please explain. Please explain again. It means you have not attended yesterday's evening class. Yes, sir. Some Yeah, network. I know. See, nitrogen is having 5 electrons. So one is started 1, 2, 3, 4. So these are 4 unpaired electron. But Yes. the valence electron of nitrogen is 5. So now the fifth electron we have to put over here. So they will become pair children. Yes, sir. Yes, So sir. this is the paired electron. But these are unpaired electrons, children. Okay. Yes, sir. Yes, So sir. unpaired electron will only have tendency to get pair up, children. Unpaired electron, please remember. Okay, Yes, sir. You Yes, have to sir. remember. You have to remember. So because that tendency only, that driving force will try to come. They will force them to come near. Yes, sir. Yes, sir. That is Yes, the sir. driving force. And once they come near, see, they will share 6 electrons between them. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So we can write like this, short form. 6 electron means 3 bond. Yes, Triple sir. bond, sir. And now tell me how many sigma and how many pi? 2 Sir, pi, 1 1 sigma and sigma. 2 pi. 2 pi. Yeah, sigma. 1 sigma and this one is pi and this one is pi. I think that now you are developing some concept. Yes, sir. Yes, sir. Now here tell me number of bonding electrons in this case how many? 4. 4. No 4. How can you say 4? 3. 3. 3. Bonding electrons. No. 6. Number of 6. bonding electrons. 6. 6. So this is wrong, children. Intentionally I have written 4 so that I can think that who is using brain. Yeah. Okay, I am your teacher. Did you understand? Yes, sir. Yes. So how many Yes, sir. electrons? 6 electron. Number of bonding electrons, 6. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And number of covalent bonds. 2. 3. 3. Sir, Who is 3. telling 2? Total 3 bonds are formed or not? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, for each bond, each dash means 2 electrons. Yes. Yes, sir. Okay, sir. So now out of these 3, tell me how many sigma and how many pi? 1 2 pi, sigma, 1 2 sigma. pi. Very nice answer. I think you got the point. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. see,
Please take a note of it, what I have written. See, very nice lines, golden lines. If one atom is electropositive and another atom is electronegative, Then it is Ionic bond. Ionic bond. If both of them are electronegative, covalent. Covalent. very nice. One is electropositive, other are also electropositive. Metallic bond. Metallic bond. वेरी नाइस. कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, कितना पढ़ते हैं बाबा, कितना दिमाग है. अब देखिए नेक्स्ट है एक और केस. वैकेंट ऑर्बिटल है किसी एटम के पास. Yes, sir. हेलो. Yes, sir. Yes, Okay, sir. Yes, sir. के पास लोन पेयर है. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर ऐसा कंडीशन होगा तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? Coordinate bond. Bond. Coordinate covalent को और bond. कौन सा Dative बॉन्ड भी bond. बोलते हैं? Dative bond. Dative bond. तो डेटिव बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर डेटिव बॉन्ड? One should be Sir, vacant valence orbital. electron and lone pair of and one electron. should be orbital. वैकेंट ऑर्बिटल. Vacant orbital. One atom should have vacant orbital and another atom should have a lone pair. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. now follow me. I will tell you the condition. You have to tell the bond. You have to match it. Electropositive and electronegative. Ionic bond. Ionic bond. Electronegative and electronegative. Covalent bond. Covalent bond. Covalent bond. Electropositive and electropositive. Metallic Metallic bond. bond. Vacant orbital and lone pair. Dative bond. Coordinate bond. bond. Or Bond. dative bond. Very nice, very nice. Now, solve it. Formation of CO2. Try your own. So in CO2, now this is not a homomolecule, it is a heteromolecule. Yes. Yes, sir. Heteromolecules are what? Compound. Yes. Yes, Yes, sir. sir. So in heteromolecules, you have to first find out which is the central atom Sir, carbon. and Carbon. which is the surrounding atom. How you will find? Yes. So Oxygen. wait. Oxygen. 2 minutes, just wait. Okay, How sir. to find out the central atom? So in both the atom you see whose electronegativity is less. Carbon. 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 Those atom whose electronegativity is less will become central atom. Yes, sir. Yes, sir. Those electronegativity is more will become surrounding atom. Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. और एक कंडीशन है, central atom should be big, Yes, sir. Yes, sir. surrounding atom should be small. Small. Yes, sir. आई बात समझ में? हाँ, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट होने से एकदम पूछेगा. मेरे पास एक से एक ठीक है, एग्जाम्पल है समझाने के लिए. Okay, ठीक sir. है, सर. ओके, अब देखो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने पहले कार्बन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. 4. 4, सर. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. कल मैंने डिस्कस किया है, नहीं हुआ तो उसका लेक्चर को फिर से देखो. पूरा डेप्थ से बताया है कि उसके पास कैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड sir. इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6. नहीं. 6 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर नहीं. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं चिल्ड्रन. Yes, sir. अब ये जानना बेहद जरूरी हो गया कि कितने लोन पेयर है और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. Paired electron. हाँ, तो वो लेक्चर्स मैंने दे दिया है आपको, ग्रुप में सेंड कर दिया है, पर्सनली सेंड कर दिया है. प्लीज उसको देखिए. बढ़ू आगे. Yes, sir. Yes, sir. तो एक और ऑक्सीजन है, उसके पास भी यही सिचुएशन है. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है. अब ये लोग करीब आएंगे क्योंकि कौन सा फोर्स उनको करीब लेके आएगा? क्या टेंडेंसी टू One गेट force. पेयर्ड अप. टेंडेंसी टू गेट पेयर्ड अप. Yes. One, टेंडेंसी sir. टू टेंडेंसी टू गेट पेयर अप. तो लोग क्लोज आएंगे, देन दे विल क्लोज, दे विल बिकम क्लोज, दे विल कम क्लोज. भाई क्लोज आएगा Yes, sir. तभी तो बॉन्ड बनेगा. Yes, Yes, sir. sir.
Okay, so they are coming close, and after coming close, see what happened. This is the electrons of carbon, and this is the electrons of oxygen. Okay, Oxygen. and now Yes, they sir. have started Yes, sir. sharing. Who told to ask them to share? Lewis. Yes, sir. Lewis told that if both of them are not having tendency to lose electron, both of them want electron, then only God can help. And that is that they can do a mutual sharing of electron, and they can become, Yes, sir. they can form a covalent bond, and in this way they can be joined. Yes, sir. Yes, sir. And say now, अब ऑक्सीजन का विष खत्म हो गया, उसका वो चाहता था कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, कार्बन चाहता था मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. एंड नाउ सी दिस इज द एरिया ऑफ कार्बन. Yes, sir. Yes, sir. बताओ कार्बन के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 8. तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ. हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. Now this is the area of oxygen. Count it. Octet complete. Yes, sir. Yes, sir. This is the area of another oxygen. Octet complete. Yes, sir. Yes, sir. Can we Sir. write in short form? Yes, sir. Yes, See, sir. this is the oxygen and 4 electrons are shared. So I made double bond. Again is here also left hand side double bond, right hand side double bond around carbon. Yes, sir. Yes, sir. And again between two atoms 1 sigma 1 pi. Yes, sir. Yes, 1 sir. sigma 1 pi. Yes, sir. So Yes, if sir. somebody asks in CO2 how many sigma bonds, what you will say? 2 sigma bond. How many pi? 2 2 2 pi. pi. Okay. pi. Now just you tell me one information that there is a difference between electronegativity of carbon and oxygen. What is the electronegativity of carbon? 2.5, sir. 2.5. What is the 1.5. electronegativity of oxygen? 3.5. 3.5. So there is a difference in electronegativity. It means the One. bond is polar. The bond is polar. Yes, sir. Yes, sir. Dipole is there. Dipole. Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir. We have discussed. Those who have not attended the lecture when I explained dipole moment, polar bond, non-polar bond, you have to please go through that lecture once again. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So here polarity is there, and polarity is expressed in form of dipole moment, and it is a vector quantity. So we have to express like this. Yes, sir. We have to, ये जो सिंबल है, मैंने कहा है केमिस्ट्री में एक से एक स्टाइल है. Yes. So this Yes, sir. arrow is telling that this bond is having some polarity, and we can express that it is having some dipole moment. Yes, Yes, sir. So there are two type of bond, and Yes, both the sir. bonds are similar. Yes, sir. Both the bonds are similar. One dipole moment is in right hand side and one dipole moment is in left hand side, and the angle between them is 180 degree. They are opposite to each other. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if this is positive, this is what? Negative. Yes, sir. Sign Sir. is changed. So if you add them, what will the total dipole moment? 0. That's why CO2 having dipole moment equal to 0. 0. Did you understand, children? Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now if you consider the total molecule, this is having negative charge and this is also having negative charge. Both the charge are same or different? The Same. different. Same, sir. Same. Okay. Yes, then we cannot call that, Yes, and this dipole moment is also cancelled and it becoming 0. Yes, sir. So we Yes, will tell sir. this total molecule as a non-polar. Each bond is polar, but they are cancelling, they are fighting with each other. The result became what? 0. Yes, 0. sir. That's why it is a non-polar molecule. Yes, Okay, sir. sir. Did you understand? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir.
because in this end negative and this end positive. If this end is also positive, then we can say that it is a polar molecule. Yes, sir. Like HCl. Yeah, like HCl. I will give you all example. This matter is clear to you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And if somebody Yes, sir. asks you to calculate dipole moment, dipole mu is equal to dipole moment, mu. So you have to ask two things to that person, those who is asking you to calculate dipole moment. You ask Yes, sir. that Yes, what sir. is the charge in any one of the end, Yes, sir. Sir. and you have to tell the bond length, means what is the distance between the two end, Okay, Yes, sir. sir. and just you multiply that value becomes dipole moment. Yes, sir. Yes, sir. Hello, Yes, did you sir. understand? Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, next. I will, don't worry. I will give more and more example when time will come. Don't worry at all. So it is my technique. I will, एकदम जोर का झटका एकदम धीरे से लगेगा बेटा. हेलो. Yes, sir. एकदम कोई भी Yes, sir. कॉन्सेप्ट को एकदम पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जब तुम्हारे दिमाग में वो इंस्टॉल होते रहेगा 24 आवर्स में. हेलो. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. देखो यहाँ पर डाइपोल, इसमें इस पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करें तो ये पर्टिकुलर बॉन्ड पोलर है. देखो पर्टिकुलर बॉन्ड, क्यों? आप देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड भी है. डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 3.5 माइनस 2.5 कितना आया? 1. 1.0. तो ये One. लेस देन 1.7 हुआ कि नहीं? हाँ, Yes. sir. Yes, sir. और लेस देन 1.7 है तो बॉन्ड कौन सा होगा? Covalent bond. Covalent bond. 1.7 से ज्यादा होता तो Ionic Ionic bond. Ionic bond. Ionic. किसको बात समझ में आ गया? समझ में आ गया सर. ठीक है. समझ आ गया. अगर समझ में आ गया तो ये होमवर्क आज कंप्लीट करना है आपको. लिख लो H2, तो फटाफट लिखो दिस होमवर्क. ये होमवर्क कंप्लीट करके मेरे को व्हाट्सएप में भेजोगे. हाँ, sir. Yes, sir. जल्दी लिखो, टाइम नहीं है. We don't have much time. H2, H2, Cl2, C2, N2, O2, N2, C4, S8. मुझे मालूम है कि इसमें कुछ तो बनेगा और कुछ नहीं बनेगा आपसे. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. फिर आपने कभी सोचा है कि तब मैंने दिया क्यों है? समझाने के लिए. क्या कि पहले आप ट्राई करो. ठीक है, पहले आप ट्राई करो. ट्राई करने के बाद ना जब दिमाग लगे अरे बाबा ये नहीं बन रहा है, तब थोड़ा सा लगेगा कि SO2 के बाद आप क्या लिखे? किसके बाद? SO2. What you have written after SO2? SO2 के बाद BeCl2. 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 Cl2. जो डाउट क्लियरेंस क्लास को अटेंड नहीं करता बेटा, आई एम हैविंग सिंसियर रिक्वेस्ट टू देम, प्लीज ज्वाइन इन डाउट क्लियरेंस क्लासेस आल्सो. Okay, sir. प्लीज यूज द टाइम. write it fast or take the screenshot. Total story is based on Lewis symbol. How many unpaired electrons are there? Okay. How many lone pairs are there? See, these are so many things are there. Some are charged particle also there. Somebody ask about dative bond, no? Yes, sir.
See, have you written completely? Yes, No, sir. sir, last No, one. sir. Write Just fast, scroll up, write please. fast, write fast. Done, sir. Done, very nice. See, beta, Complete, sir. see one thing. If we draw the structure of BF3, okay? Yes, sir. BF3, okay? Tell me yes or no. Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay, the structure will be like this. Okay, and they will have one vacant orbital, boron. Yes, sir. Yes, And sir. if we draw the structure of NH3, this will be the structure. One vacant. So this is lone pair of electron. And this is vacant orbital. Vacant orbit. And I told Yes, you when there is vacant orbital and lone pair, which bond will be formed? Dative bond, sir. Dative bond. Coordinate. Yeah. See what will happen now. See what will happen now. Because boron 1 dash means 2 electron here, 2 electron here, 2 electron here. How many electrons are having boron? 6. 6. 6. 6. It means they are in sextate state. Okay. Okay, Yes, sir. sir. When any Yes, sir. atom having 6 electrons, so it will try to complete it octet because it is having vacant orbital also. Yes, sir. Yes, So what sir. will happen? Okay, they will come close. They will come close. Why? Because if they come close, nitrogen is having a lone pair. Yes, sir. Yes, So sir. nitrogen will try to help boron. So it can give its electron pair to this vacant orbital and they can form. So boron will be benefited more. Yes, sir. Yes, sir. Okay, again they have shared the electron pair, but both the electrons are given by nitrogen. Yes, sir. Such type Sir, of F. bond. Oh, sorry, it is F. It is F. I am extremely sorry. Extremely sorry, Babu. Okay, it is F. It is F and it is F. Did you understand? Yes, sir. So Yes, we Yes, have sir. to put one arrow in dative bond showing that nitrogen has given its lone pair. So this bond is known as dative bond or coordinate bond. Who asked me this Okay, question? sir. Who asked me this question? कौन पूछा था ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, कोई भी पूछा था, समझ में आ गया बात? Yes, sir. ओके, सर एक और बार समझ. हाँ समझ लो एक बार. देखो BF3 यस सर. के पास बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है Yes, है sir. कि नहीं? यस सर. बात समझ में आई कि वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं बोरोन Yes, के sir. पास? हाँ ठीक है? Yes, sir. हाँ, Yes, नहीं है तो मेरा लेक्चर देख लेना. कल जो समझाए थे उसमें बताए थे क्लियरली किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है. यस सर. और Yes, sir. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. जी सर. ओके, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है. एक वैकेंट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सर 2. 2. तब और नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी ये मांग रहा है कि चलो हेल्प कर दो बाबू मेरे को, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है इनके पास. यस सर. Yes, तो sir. इसके लिए ज्यादा इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? Nitrogen. नाइट्रोजन प्ले कर रहा है. अगर नाइट्रोजन बोले नहीं हम नहीं देंगे, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बोला ही गया है कि हम लोन दे देंगे. Yes, sir. Yes, समझ में आया? sir. यस सर. Yes, sir.
Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, लोन दे दिए हैं So जब nitrogen will share or it will give full 2 electron to Yes, boron. yeah. अगर देता तो दे करके अलग ना हट जाता, Yes, sir. तो दिया कहाँ ये, खाली क्या शेयर करना किया है? है, खाली शेयर किया है। देखो बी एफ और इसका वैकेंट ऑर्बिटल था, और ये एन है, ये एच है, और ये नाइट्रोजन का वैकेंट ऑर्बिटल है। देखो सॉरी लोन पेयर है ऐसे, तो शेयर ने किया Lone है ये। pair. Yes, sir. जी दे sir. देता कंप्लीट तो दे के अलग हट जाता, लेकिन शेयर किया है। 2 एटम है ना, 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 2. 2, और 2 ओलोन से एक बॉन्ड बनता है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Hi, Aman. Sigma bond. हाँ, तो एक तरह का ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसमें हम एक एरो दिखा देंगे तो अच्छा है, मतलब नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट ऐसा। लेकिन इसमें डीमेरिट क्या है, पता नहीं लग रहा है कि लोन पेयर दिया किसने है, Yes, sir. इसलिए हम ऐसे एरो पुट कर देते हैं। Okay, sir. आ गया बात समझ में? हाँ, Yes, sir. sir. चलो आज के लिए Thank you, इतना sir. ही। ज्वाइन इन डाउट क्लियरेंस क्लासेस। Okay, Yes, sir. sir.